नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आइ हम सब देखब वीडियो के अंतर्गत काव्यक भेद। काव्यक भेद तीन आधार पर कयल गेल अछि। भाषाक आधार पर, दोसर अछि स्वरूपक आधार पर, तेसर रमणीयताक आधार पर। तो एहि वीडियो के अंतर्गत हम सब देखब काव्यक भेद के स्वरूपक आधार पर। कारण भाषा के आधार पर और रमणीयता के आधार पर देल गेल परिभाषा मान्य अछि। स्वरूपक आधार पर काव्यक भेद दू प्रकारक अछि, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य होइत अछि जे काव्यक आनंद पढ़ि कऽ वा सुनि कऽ प्राप्त होइत अछि, से श्रव्य काव्य भेल। शैलीक आधार पर श्रव्य काव्यक सेहो तीन टा भेद अछि, पद काव्य, गद्य काव्य, मिश्र काव्य अथवा चंपू काव्य। मिश्र काव्य के चंपू काव्य सेहो कहल जाइत अछि। पद काव्य भऽ गेल, गद्य काव्य और मिश्र काव्य। पद काव्य छंदक बंधन से बांधल रहैत अछि। पद काव्य में रस, अलंकार, छंद आदि विशेष ध्यान राखल जाइत अछि। आई काव्य शास्त्रक विधि विधान पर कसल रहैत अछि। आ पद काव्यक सेहो तीन टा भेद अछि, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आ कोश। प्रबंध काव्य भेल जे छंदबद्ध लिखल जाइत अछि। मुक्तक काव्य छंदक बंधन से मुक्त रहैत अछि। आ कोश भेल जे डिक्शनरी। प्रबंध काव्य के सेहो दूटा भेद अछि, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य भेल जे कोनो देवी देवता आ कोनो प्रसिद्ध व्यक्ति के कथा वस्तु के लऽ कऽ लिखल जाइत अछि। आ महाकाव्य सर्गबद्ध रहैत अछि। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग में लिखब आवश्यक अछि। दोसर भेल खंड काव्य। खंड काव्य कोनो एक घटना के लऽ कऽ लिखल जाइत अछि। खंड काव्य में आवश्यक नहि अछि जे देवी देवता के बस कथा वस्तु लऽ कऽ लिखल जाय आ कोनो प्रसिद्ध व्यक्ति के। एहिमे जन सामान्यों के कथा वस्तु लऽ कऽ लिखल जा सकैत अछि। आ खंड काव्य अधिकतम 7 सर्ग में लिखल जाइत अछि। इहो सर्गबद्ध रहैत अछि। से अगिला अछि मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य एहन काव्य होइत अछि जे छंदक बंधन से मुक्त रहैत अछि। मुक्तक काव्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत अबैत अछि। मुक्तक काव्य के भेद अछि कविता, गीति, स्फुट, अन्योक्ति। ई सब मुक्तक काव्यक भेद भऽ गेल। एक बाद अबैत अछि गद्य काव्य। गद्य काव्य भेल गद्य काव्य छंदक बंधन से मुक्त रहैत अछि। गद्य काव्य काव्य शास्त्रक अनुसार नहीं चलैत अछि, वो अपन व्याकरण के अनुसार लिखल जाइत अछि। व्याकरण के नियम के पालन करैत अछि। गद्य काव्यक अंतर्गत कथा, आख्यायिका, उपन्यास, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवन कथा, निबंध, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, आलोचना, साहित्य इतिहास, अनुवाद साहित्य, संपादित साहित्य,
आदि सब अबैत अछि गद्य काव्यक अंतर्गत। से अगिला भेल मिश्र काव्य। मिश्र काव्य में गद्य आ पद दुनू सम्मिलित रहैत अछि। मिश्र काव्य में गद्य आ पद दुनू सम्मिलित रहैत अछि। मिश्र काव्यक सेहो दूटा भेद अछि, विरुद्ध और क्रमभक। विरुद्ध भेल जाहिमे कोनो राजाक गद्य पद में प्रशस्ति गान भेल रहैत अछि तऽ ओ भेल विरुद्ध काव्य। क्रमभक भेल जाहिमे विभिन्न भाषाक आश्रय ग्रहण कऽ राजस्तुति कयल जाइत अछि, ओ क्रमभक भेल। एकरा बाद अछि दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के सेहो दूटा भेद अछि, रूपक और उपरूपक। रूपक जे अछि नाटक पर आधारित रहैत अछि। एकर दृश्य नाटक पर आधारित रहैत अछि आ रूपक सेहो 10 प्रकारक होइत अछि। एहिमे अछि पहिल नाटक। नाटक रूपक प्रसिद्ध भेद अछि। एहिमे वीर आ श्रृंगार रसक प्रधानता रहैत अछि। नाटक में 5 से 10 अंक रहैत अछि। दोसर भेल रूपक के भेद प्रकरण। प्रकरण प्रधान रस श्रृंगार रहैत अछि। प्रकरणक कथा वस्तु लौकिक रहैत अछि। प्रकरण में सेहो 5 से 10 अंक रहैत अछि। तेसर भेल प्रहसन। प्रहसन हास्य प्रधान एकांकी अछि। एहिमे परिहासपूर्ण वार्तालाप रहैत अछि, जेना धूर्त समागम प्रहसन अछि। इससे अगिला भेल डीम। डीमक कथा वस्तु पुराण वा इतिहास प्रसिद्ध रहैत अछि। डीम 4 अंक में लिखल जाइत अछि आ रौद्र रस प्रधान रहैत अछि। डीम में कुल 16 टा पात्र रहैत अछि। एक अगिला भेल अंक। अंक में करुण रस प्रधान रहैत अछि। अंकक विषय वस्तु प्रख्यात रहैत अछि। ई 1 अंक में लिखल जाइत अछि, तें अंक एकांकी अछि। बीथी। बीथी सेहो 1 अंकक अछि, एकांकी अछि। बीथीक कथा वस्तु कल्पित होइत अछि। बीथी श्रृंगार रस प्रधान रहैत अछि आ 1 से 2 पात्र में मात्र रहैत अछि। एक बाद भेल भान। भान सेहो एकांकी अछि। भान में मात्र 1 टा पात्र रहैत अछि। एकर संवाद आकाश भाषित रहैत अछि। इससे अगिला भेल व्यायोग। व्यायाग सेहो एकांकी अछि। व्यायोगक कथा वस्तु एवं नायक प्रसिद्ध होइत अछि। एक बाद अछि इहा मृग। इहा मृग 4 अंक में रहैत अछि। एकर नायक धीरोदात्त मनुष्य वा देवता रहैत अछि। एक बाद भेल समवकार। समवकार 3 अंकक होइत अछि। समवकार में वीर रस प्रधान रहैत अछि। एहिमे 12 टा पात्रक प्रयोग कयल जाइत अछि। तैं एहि तरह ई सब ऊपरका भऽ गेल रूपक के भेद। रूपक के 10 प्रकार अछि से सब। आ ओ दृश्य काव्यक अंतर्गत अबैत अछि। दृश्य काव्यक दोसर भेद अछि उपरूपक। उपरूपक 18 प्रकारक होइत अछि। एहिमे अछि नाटिका। नाटिका 4 अंकक रहैत अछि।
नाटिकाक नायिका राजवंशक गैन पटु अनुरागिनी कन्या रहैत अछि आ नायक धीर ललित राजा रहैत अछि। एहिके बाद भेल त्रोटक। त्रोटक में 5, 7, 8 या 9 अंक रहैत अछि आ श्रृंगार रस प्रधान रहैत अछि। एक अगिला भेल गोष्ठी। गोष्ठी एकांकी अछि, एहिमे श्रृंगार रस प्रधानता रहैत अछि। सट्टक। सट्टक नाटिका सदृश होइत अछि। सट्टक में अंक के जवनिका कहल गेल अछि। सट्टक में अद्भुत रसक प्रधान रहैत अछि। सट्टक के बाद भेल नाट्यरासक। नाट्यरासक में श्रृंगार रस से युक्त हास्य रस प्रधान रहैत अछि। इहो एकांकी अछि। एक अगिला भेल प्रस्थानक। प्रस्थानक 2 अंकक रहैत अछि। एकर नायक दास आ नायिका दासी रहैत अछि। प्रस्थानक के बाद अछि उल्लाप। उल्लाप 1 अंकक रहैत अछि। एकर नायक, एकर कथा दिव्य रहैत अछि। उल्लापक बाद भेल काव्य। अखन तक काव्य के चर्चा भ रहल अछि, लेकिन ई काव्य भेल उपरूपकक भेद, दृश्य काव्यक अंतर्गत अबैत अछि। काव्य में 1 अंक आ हास्य रस प्रधान रहैत अछि। एहि में गीतक अधिकता रहैत अछि। रासक। रासक सेहो 1 अंकक रहैत अछि। रासकक नायिका प्रसिद्ध आ नायक मूर्ख रहैत अछि। एहि में पात्रक संख्या 5 रहैत अछि। प्रेंखल। प्रेंखन एकांकी अछि। एकर नायक हीन पुरुष होइत अछि। अगिला भेल संलापक। संलापक 3 अंकक होइत अछि आ एकर नायक पाखंडी रहैत अछि। संलापक के बाद भेल श्रीगदित। श्रीगदितक कथा प्रसिद्ध रहैत अछि आ ई एकांकी अछि। श्रीगदित के बाद भेल शिल्पक। शिल्पक 4 अंकक होइत अछि। एहि में मरघट, मुर्दा आदिक वर्णन रहैत अछि। शिल्पक नायक ब्राह्मण होइत अछि। विलासिका। अगिला अछि विलासिका। विलासिका एकांकी अछि आ श्रृंगार रस प्रधान है। एक बाद भेल भानिका। भानिका सेहो एकांकी अछि। एकर नायक मंदमती आ नायिका उदात एवं प्रगल्भा होइत अछि। दुर्मलिका। दुर्मलिका 4 अंकक रहैत अछि। एकर नायक छोट वर्गक रहैत अछि अथवा छोट जातिक से रहैत अछि। परकर्णिका। परकर्णिकाक नायक व्यापारी रहैत अछि आ एहिके अलावा जे कर्णिकाक और सब चीज प्रकरण के सदृश रहैत अछि। के बाद भेल हल्लीस। हल्लीस सेहो एकांकी अछि। एहि में गीतक अधिकता रहैत अछि। एहि प्रकारे हमसब देखलहुँ काव्यक भेद स्वरूपक आधार पर। काव्यक भेद जे स्वरूपक आधार पर देल गेल अछि, आचार्य विश्वनाथ द्वारा देल गेल अछि। रूपकक भेद आ उपरूपकक भेद सेहो नेट में पूछैत अछि जे रूपक कते प्रकार के अछि, 10 प्रकार के, उपरूपक 18 प्रकार के। एहिमे से कोनो के नाम दऽ देत, कहत ई कोन रूपक अछि या उपरूपक अछि। तैँ ई सब नेट में कतेक बेर आयल अछि।
धन्यवाद।